Hello friends, how are you? Hope you are safe and healthy also. Now, I'm starting class 12th chemistry, that is lesson number 9, that is coordination compounds. That is coordination compounds. As their name indicating coordination compound, that means those compounds in which coordinate bonds in which coordinate bonds are formed. Coordinate bonds are formed called coordination compounds. Before starting that topic, we have to discuss some basics of that, in which the first one is simple salt. Our first topic is simple salt. If the question comes in our mind, that is, what is simple salt? What is simple salt? If we consider the normal definition, then we can say that the salt which is formed by neutralization reaction, which is formed by neutralization reaction between acid and base. Those salts which are formed by neutralization reaction between acid and base are called simple salt. Are called simple salts. If we consider its example, then we can say that NaCl, Na2CO3, sodium carbonate. NaCl, sodium chloride, Na2CO3, sodium carbonate. Na2SO4, sodium sulfate. MgCl2, magnesium chloride. All of these are formed by neutralization reaction between acid and base. If we consider that, so we can, if we making the reaction of that, we can say that HCl react with NaOH and they form NaCl and H2. So they formed by neutralization reaction. They formed by neutralization reaction between acid and base. Got it? After that, second one, the second is additional or molecular salts. Additional or molecular salts. If we consider the definition, then we can say that those salts which are formed by addition of two or more simple salts. Addition of two or more simple salts. That means we can say that they are formed by addition of simple salts. They are formed by addition of simple salts. Got it? Clear? The compound and the salts which are formed by addition of simple salts, that are called molecular salts or additional salts. These are also called compound. These are also called compounds. If we consider the examples, then the first one is when KCl react with MgCl2 in the presence of water. In the presence of water, 6 water molecules, then they combine, these salts combine and make KCl dot MgCl2 dot 6H2O dot 6H2O. It is called, this salt
is called kernelite. Kernelite. This is called kernelite. Got it? This is important example for us. Generally in exam it is asked. Okay, that is kernelite. Second we consider, that is when K2SO4 react with Al2SO4 thrice. K2SO4 Al2SO4 thrice dot plus 24H2O. Then they combine and make K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. 24H2O. It is called potash alum. It is called potash alum. This is also important for our exam. It can ask that write the formula of potash alum. Got it? Similarly, there are lots of other salts which is important for our exam. Similarly, when FeSO4, that means ferrous sulfate, react with ammonium sulfate, when ferrous sulfate react with ammonium sulfate and 6 water molecules, they form FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2 dot 6H2. It is called Mohr salt. It is called Mohr salt. Got it? So these type of compound in which two salts, two or more than two, may be possible like more than two salts combine are called addition or molecular salts. Are called addition or molecular salts. Okay. Now, if we consider the addition salts, they are two types. One is double salt. And second is complex salt. One is double salt and second one is complex salt. The question comes in our mind, that is what is double salt and what is complex salt. Double salts are those salts which stable only in solid state, stable in only solid state, those salts which are stable only in solid states and decompose into ions, in aqueous condition or aqueous solution. These are called double salts. सीधा सीधा बोले तो ये साल्ट केवल सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं. इसमें सॉलिड स्टेट में जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाया जाता है, दैट मीन्स जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में जैसे इनको डिसॉल्व करते हैं ये अपने आयंस में टूट जाते हैं. दे डिकम्पोज इनटू रेस्पेक्टिव आयंस. गॉट इट?
Clear? If we consider the complex salts, then we can say that those salts which are stable in solid as well as aqueous solutions. Those salts which are stable in solid as well as in aqueous solutions are called complex salts or complex compound. मतलब ये वो salts हैं जो कि solid state में भी stable होते हैं और जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करके इनका एक्वस सॉल्यूशंस बनाया जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं. इसमें कहते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल यहां पर होते हैं. ओके, अगर इनकी बात करें, these salts gives test of all ions in aqueous solution. अगर इनमें आयंस का टेस्ट किया जाए एक्वा सॉल्यूशन में तो जिसमें इसमें जितने टाइप के आयंस होते हैं उन सभी का टेस्ट ये देते हैं, उन सभी का ये टेस्ट देंगे. जबकि इनकी बात करें तो दे डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस. ये अपने सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगर यहां पर बात करें इन दीज साल्ट्स, अगर इन साल्ट्स की अपन बात करें, सिंपल साल्ट्स की बात करें तो ये बनाए जाते हैं मिक्सिंग. दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ सिंपल साल्ट्स. दो या दो से ज्यादा जो सिंपल साल्ट्स हैं, 2 और मोर सिंपल साल्ट्स को जस्ट मिक्स किया जाता है जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, डबल साल्ट्स मिलते हैं. जबकि इनकी बात करें, दे डू नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. दे डू नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. दे फॉर्म्ड बाय स्पेशल टेक्निक्स. दे फॉर्म्ड बाय स्पेशल टेक्निक्स. किससे बनाए जाते हैं इन्हें? स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू इन्हें बनाया जाता है. फॉर्म्ड बाय स्पेशल टेक्निक्स. इन्हें किससे बनाते हैं अपन? स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू इन्हें बनाया जाता है. गॉट इट? यहां पर दो या दो से ज्यादा साल्ट्स मिक्स हैं. दो साल्ट्स हैं तो डेफिनेटली कम से कम 2 कैटायन होंगे और 2 एनायन होंगे. तो दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इनमें मिनिमम 2 कैटायन और 2 एनायंस यहां पर होते हैं. या अपन बोल सकते हैं देयर आर more than one type of cation and anion. There are more than one type of cations and one type of anions. जबकि इनकी बात करें तो there is only one type of cation. मतलब एक ही टाइप का यहां पर कैटायन होगा. एंड एनायन, मतलब जब ये आयनों में टूटेंगे तो ये एक ही कैटायन और एक ही एनायन देंगे. जबकि ये 2 या 2 से ज्यादा टाइप की कैटायंस और 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एनायंस यहां पर देते हैं. अगर अपन डबल साल्ट्स में बात करें तो इनमें पाए जाते हैं आयोनिक बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं इनमें? आयोनिक बॉन्ड्स. जबकि इनमें अपन बात करें तो इनमें पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. इनमें आयनिक बॉन्ड और इनमें पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. गॉट इट? अगर यहां पर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर ये आयन जो इनकी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, अपने जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. जबकि इनमें अगर अपन बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट की प्रॉपर्टीज इसके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है. उनसे बिल्कुल अलग यहां पर होती है. गॉट इट?
अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स में बात करें तो जो अभी अपन ने लिखे थे कौन कौन से, मोहर साल्ट, या जो अपन ने लिखा था पोटाश एल्म, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, डबल साल्ट। किस में आते हैं ये, डबल साल्ट। जबकि इनमें अगर अपन बात करें तो K4 FeCN6, K4 FeCN6 Cu NH3 4 SO4, NH3 4 SO4, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको साल्ट्स का पैरामीटर्स या साल्ट्स का जो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, डबल साल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। होप यू लाइक इट, थैंक यू।